Good morning and a warm welcome to all our viewers on Doordarshan Sports as we bring you the Tokyo Olympics live on day 9 or 10, whichever way you look at it, if you also include the opening ceremony. I am Arjun Chaudhary, your host, and my co-host is Neeti Rawat. थैंक यू सो मच अर्जुन। तो आज के एक्शन में बहुत कुछ लाइनअप है, जो एक्साइटमेंट है, वो जो इंटरेस्ट है, वो लगातार बना हुआ है। बेशक भारत की हर दिन मिक्स परफॉर्मेंस रही हो, लेकिन आज के दिन भारत की परफॉर्मेंस किस तरह से होगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। Also, if you look at India's performance in hockey, it has been a certain turnaround for women's hockey, especially after India defeated South Africa 4-3 and is in the race for the quarterfinal berth if Ireland loses to Great Britain or drops a point. As far as men's hockey is concerned, it was all expected. India defeating Japan by 5-3 and making a place in the quarterfinal. The only difference is that they will play the third place team in Pool B. Neeti, a great performance as far as men and women's hockey is concerned. आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है और महिला हॉकी टीम ने एक इतिहास रचा है। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का ये पहला मौका है इंडियन विमेन हॉकी टीम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल जो मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच हुआ, उस पर काफी कुछ निर्भर करता था। ग्रेट ब्रिटेन ने जो है 2-0 से आयरलैंड को शिकस्त दी और उसके बाद भारत को मौका मिला क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने का। 1980 मॉस्को गेम्स के बाद अर्जुन, ये सेकेंड चांस है इंडियन विमेन हॉकी के लिए जब वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सरप्राइज पैकेज कह रहे थे डार्क हॉर्सेस है, लेकिन विमेन हॉकी टीम ने जो सरप्राइज किया है वो काबिल तारीफ। Well, the white horse in this performance has been Vandana Kataria with a hat-trick of goals, the first Indian to score a hat-trick of goals in the Olympic Games that we saw yesterday, and she was led very well by Rani Rampal, the captain. And for a change, the goalkeeper Savita Punya didn't have to work very hard in this India's victory against South Africa. And just coming back to the men's victory against Japan 5-3, there were all-round performance there. We can see right now at 4 o'clock, the golf has already started, the men's individual stroke play, where Udayan Mane is in round 3, which is day 3 of the golfing event today. We'll have to wait and see how Anirban Lahiri had performed earlier on. And we will see Anirban Lahiri also in performance at 5:55 a.m. With the multiple rounds to play on day 3 itself. तो गोल्फ में आप चुनौती बहुत बड़ी है भारत के लिए। अनिर्बान लहरी आज किस तरह से राउंड 4 में अपनी चुनौती पेश करेंगे ये देखेंगे। फिलहाल अगर इवेंट इक्वेस्ट्रियन की बात करें, इवेंटिंग क्रॉस कंट्री टीम और इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडिया के फाउद मिर्जा जो है कल डे 8 के एक्शन के बाद काफी नीचे पोजीशन पर थे, लेकिन आज वो किस तरह से चेंज लाएंगे क्योंकि इक्वेस्ट्रियन में अभी चुनौती बनी रहेगी। And this is a super heavyweight men's quarterfinal bout between India's Satish Kumar and Uzbekistan's Bakodev Jalalov, which will take place at 9:36 in the morning today. It's the first quarterfinal bout, and if Satish Kumar wins this bout, then he will make it to the semi-finals, and it would be a certain medal by Satish Kumar. And of course, if he wins that, it will be a silver or a gold contention for Satish Kumar itself. बिल्कुल अर्जुन, अमित पंगल जो है उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आज सतीश कुमार क्या करने वाले हैं क्योंकि अभी भी बॉक्सिंग के रिंग से उम्मीदें बनी हुई हैं। वहीं बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल मैच पीवी सिंधु का होगा बिंग जियाओ के साथ। चाइना के खिलाफ अभी भी चुनौती काफी बड़ी होगी उनके लिए। जो कल का मुकाबला उनका हुआ वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अर्जुन ताइजू के सामने खड़ा होना ये बिल्कुल आसान नहीं था। 13-5 के हेड टू हेड कॉन्टेस्ट के साथ में पीवी सिंधु जो है ताइजू के सामने थी और कल उन्हें हार झेलनी पड़ी। Well, she lost 18-21, 12-21 against the world number 1. We also have the men's quarterfinal, the remaining match in the men's hockey, which is India versus Great Britain. Once again in the morning at 5:30. In the evening rather, 5:30 in the evening. But India is already qualified for the quarterfinals after the victory against Japan yesterday by 5-3. हॉकी के लिए बहुत खुश खबर है कि दोनों की दोनों टीम ने, चाहे वो महिला हॉकी हो या फिर पुरुष हॉकी,
दोनों ही टीम्स ने ओलंपिक स्टेज पर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अर्जुन, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं इंडियन हॉकी से काफी ज्यादा उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस पास में रहा है, लेकिन ओलंपिक स्टेज में पिछले कुछ वर्षों से भारतीय हॉकी कुछ खास नहीं कर पाई है। अब यहां पर उनके सामने सुनहरा मौका है और जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। वंदना कटारिया का आपने जिक्र किया, वो हैट्रिक जो है ये साफ दिखाता है, वो जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कॉन्फिडेंस है, वो जो है प्लेयर्स की बॉडी पर साफ साफ नजर आने लगा है। And the body language improved, especially after India won against Ireland by 1-0, with Navneet Kaur scoring in that crucial fourth quarter. And that really gave the confidence to the Indian women's hockey team to go and win against South Africa 4-3. It was a closely contested match with goals being scored in every quarter. And there were back-to-back goals as well. By Vandana Kataria, who scored the hat-trick, and South Africa replied very strongly under the leadership, the captain Erin Hunter. When we talk about women's performance, it has been outstanding in the Olympics as compared to the men's contention in the Olympics from India. And if you look at track and field now, Kamalpreet Kaur has now qualified for the finals, which is because of a 64-meter throw that she was able to accomplish, as against Seema Until Punya, playing into her fourth Olympics, but only managing 60.57 meters. So Kamalpreet Kaur from India into her first Olympics has qualified for the finals today. तो बिल्कुल एथलेटिक्स में भी जो है कमलप्रीत कौर ने कल काफी सरप्राइज किया अर्जुन। और जिस तरह से जब उन्होंने क्वालिफिकेशन से पहले जो राउंड होता है वहां पर इतना ज्यादा बेहतर थ्रो नहीं किया था, तो जब वहां से लिस्ट आउट हुई, इसके बाद क्वालिफिकेशन राउंड में आई, तो सिर्फ दो ऐसे एथलीट्स, दो डिस्कस थ्रोअर से, एक एलन जो यूएसए की है उन्होंने, और कमलप्रीत कौर ने, सिर्फ उन दोनों ने जो है क्वालिफाइंग मार्क टच किया तो उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिला। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 10 एथलीट्स है वो क्वालिफिकेशन मार्क भी टच नहीं कर पाए। तो अगर वो परफॉर्मेंस, अगर कंसिस्टेंसी दिखाती हैं, तो वहां पर भी मेडल हमें लगता है कि शायद कमलप्रीत कौर जो है वहां ग्रैब कर सकती हैं। We have spoken about Mirabai Chanu's performance earlier as well, where she matched her national record with a weightlifting performance in the 49 kilogram weight category, and she won the silver medal for India on day one. With the snatch and clean and jerk because of a lift of 202 kilograms. And we saw here that Kamalpreet Kaur matched her performance in India in the national records, and then she qualified into the finals of the Olympic Games at Tokyo. But if you compare it with Seema Until Punya, she threw 60.57 meters and could not qualify. But if you look at her performance in Patiala, she threw 63.72 meters to qualify. So यहाँ पे we have seen that there is a disparity between how they have thrown at home versus how they are throwing in the major event, which is the Tokyo Olympics. और अर्जुन, सीमा की जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि सीमा एक ऐसी जिनका 4th कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स है, ये बहुत बड़ी चीज है। इतने सालों तक 4th ओलंपिक का मतलब अप्रोक्सीमेटली 16 इयर्स, तो 16 साल तक इस स्टेज तक पहुंचना ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पिछले 2 सालों में जो भारतीय एथलीट्स, ना केवल भारतीय एथलीट्स, मुझे लगता है कि सभी वर्ल्ड एथलीट्स ने जो सफर किया है, जो फेस किया है, वो जो है साफ नजर आने लगा है। ना सिर्फ इंडियन एथलीट्स बल्कि बाकी के जो कंट्री के एथलीट्स हैं वो भी अपने पर्सनल बेस्ट से कम थ्रो कर पा रहे हैं। ये दिखाता है कि उसका इफेक्ट जो है वो कोविड-19 का या पैंडेमिक की जो सिचुएशन है उसका इफेक्ट सभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे क्लियरली नजर आने लगा है। So it's very important that the psychology of the athlete is tuned in. There's no point in having stage fright after performing at home and failing to perform at the same level abroad. Let's also have a look at women's boxing. Another set of disappointments. Mary Kom had not qualified earlier in the 51 kilogram weight class, but Pooja Rani Bohra of the 75 kilogram weight category, a much higher weight category, lost to a Chinese Li Qian by 0.5, which means that she has failed to qualify for the semi-finals. And you're mentioning earlier about Amit Pangal in the pre-quarterfinals has also lost his bout after winning the first round. यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना हर एथलीट को करना पड़ा। और हम लगातार जब भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं अर्जुन, तो कंसिस्टेंसी सिर्फ एक यही शब्द है जो आपकी परफॉर्मेंस को लगातार बनाए रखता है। और आपने बाकी सारे बॉक्सर्स का जिक्र किया, यहाँ पर लवलीना जो है वो जो एक अलग तरीके से उभर कर रहा है। लवलीना ने जो है एक मेडल पक्का कर दिया है, सेमीफाइनल बाउट खेलेंगे, देखेंगे क्या वो मेडल ब्रॉन्ज तो है, लेकिन क्या वो मेडल का कलर चेंज होगा।